All right, good afternoon, team. So today, I would like to share something that a lot of people ask me that they don't know how to use my alert and all, and how to put the alert. So let me share in short video. Let's take an example in NZD Okay, I recently sent this alert. It's a buy limit order, so I just copy this one, and even you can write it down. Okay, NZD go to the MT5 and select the pair. So if you unable to find, that's NZD just edit. Okay, so नीचे में आया, यहाँ पर click किया, then open chart, click on the chart option. Okay, then right now I have this. ठीक है, तो उसमें क्या करना है, I have to make a pending order, buy limit order, right? तो इसमें आया, प्लस साइन में क्लिक किया, जो भी लॉट साइज है उसमें 1050, मार्केट एग्जीक्यूशन बाय लिमिट डाल दिया मैंने, देन द एंड प्राइस कॉपी किया 89.990, बट यू कैन राइट इट डाउन 89.900. You can write it down, or you can do copy and paste also. Let's copy this SL. इसको मैंने क्या किया, पेस्ट कर दिया. ठीक है, and even TP also, TP2 copy किया, then paste. Oh, just give a moment. Let me check its buy limit. Something went wrong. Copy buy limit, price, paste. Let me place this one. Okay, I already put the limit here, but I didn't put the SLTP. But you can do one thing. ऐसे करके इसमें क्लिक करके यहाँ पर SL का दबा के यहाँ पर ऐसे modify भी कर सकते हैं. And this one, like at the same time you can do TP and SL का भी लगा सकते हैं. But इसको modify करना है कुछ अच्छा, मतलब exact जो बताया है उसमें नहीं है, तो फिर like you can copy this one. तो कुछ प्राइस में मैंने गलत किया है. ठीक है, इसको पेस्ट किया. Then the next is SL. Okay, sorry, SL में कितना रहा था, 89.700. ठीक है, modify, done. ठीक है, done. In this way, so you can apply my alert. Okay, ऐसे यूज़ करना है. ठीक है.